Which of the following has largest and shortest ionic radii? These all are isoelectronic species, all have 10 electrons. But because oxygen has only 8 protons in the nucleus, so it has the minimum pull on the electrons. So it will be having the largest ionic radii. Whereas in magnesium, it has 12 protons in the nucleus. So it has the maximum pull. Okay, so it will have the shortest ionic radii. Correct? What is the basic difference between term electron gain enthalpy and electron negativity? The electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom. Whereas the electronegativity, it is a tendency of an atom to attract the bond pair of electron towards itself. Correct? Question 3, arrange the following elements on the basis of first ionization enthalpy. Okay, so when we go from left to right in a group, in a period, the first ionization enthalpy, it actually increases. Correct? So neon has the highest ionization, first ionization enthalpy. Then fluorine. Then actually oxygen should be there now, but nitrogen has more ionization enthalpy than oxygen because of half-filled orbitals, half-filled p orbitals. Correct? So removing electron from oxygen is easier than removing electron from nitrogen due to the half-filled stability of half-filled orbitals. फिर कार्बन, फिर एक्चुअली बोरोन होना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन बेरिलियम है. फिर वापस से 1s2 2s2, तो 2s2 इज अ फुली फिल्ड ऑर्बिटल और बी में क्या होता है 1s2 2s2 2p1, तो इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरोन. एंड लास्ट इज लिथियम हैज द minimum first ionization enthalpy. Okay, so removing 1 electron for the outermost shell is very easy. So this is the arrangement. Arrange the following on the basis of electron affinity. Electron affinity is again the amount of energy released when an electron attaches to a neutral atom in the gaseous state to form an anion. तो क्लोरीन हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आप बोलोगे कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने के कारण, इट रिलीजेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, ऑल्दो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की. फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन. ठीक है.